Children, good afternoon. This is Suresh Kumar Devangan, your friend, your teacher, your mentor. Today I am here with the second lesson of Flamingo, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. As you can see, this is the picture taken from the textbook. You must have gone through so far. The best part of it I'm going to discuss with you today. Lost Spring important questions for you for your CBSE examination. As I discussed in the previous video also, CBSE is going to take it all MCQ. My dear children, I promise you, you go ahead with this video, watch it carefully, and there will not be a single question that you cannot attempt. So this is your own channel and I welcome you once again in your own channel, English with Devangan sir. Don't forget children to attempt a Google form that is given in the description box. Based on these 40 questions that we are going to do today, you will be able to evaluate your learning immediately. कितना आपने सीखा आप उसे देख पाएंगे and after watching the video twice आप 2 बार उस वीडियो को देखिए and you will get your score instantly. So without wasting much of your time, let us begin. The very first question rises, who is the author of Lost Spring? Yes, I can see happy faces. Answer is known to everybody. Yes, it is Anees Jung. My dear children, by the name it seems Anees Jung is a male writer. But let me tell you, Anees Jung is a female one. Here, question number 2. This story is an excerpt from which book of the author? Author has written many books and this is a summary, you can say, an excerpt, a part taken from it, and the answer is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. You know it. That is the complete name of the lesson. Question number 3. I have here, you can see marked question with yellow for you so that it is easy for you to identify and read the question. What does the author analyze in the story? What does the author analyze in the story? Rich people he talks about. Garbage he talks about. Poor children in their exploitation? Yes. She analyzes about poor children and their exploitation. If the question had been, what does the author talk about in the story? So she talks about rich people, she talks about garbage, she talks about poor children and exploitation and her own work. Okay? But here the question is, what does the story analyze? So the answer is going to be poor children and their exploitation. What is the central theme of the story? Lost Spring. Central theme. केंद्रीय उसकी जो थीम है वो क्या है? Options you can read very easily. Pitiable poor children and their lost childhood. Yes, that is the answer. Central theme. किस चीज को दिमाग में रख के ये पाठ लिखा गया है? I'll be speaking in Hindi as well so that our children from state school and other children, for convenience sake, they may be able to understand it. We'll be going bilingual. The pitiable poor children and their lost childhood. See, discusses about. Now, what forces the children to live a life of exploitation? बच्चे ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? Who forces them? The greed or extreme poverty or the peer pressure is there or the parents? Answer may be varied. You can call it parents, but parents are forced also because of the extreme poverty. They are the earning people. वो अपने घर के कमाने वाले लोग हैं. यदि वो नहीं कमाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? That is the feeling, and that is why Mukesh and Sahib Alam they used to work. So the answer is going to be extreme poverty. अत्यंत गरीबी के कारण वो काम करने के लिए मजबूर है. Question number 5. According to the author, what was the garbage for the parents? ध्यान रखना, for the parents पूछे, for the children नहीं. According to the author, what was garbage for the
parents, and garbage for the parent means of survival. उसी गार्बेज से, उसी कचरे से तो उनका घर का रोजी रोटी चल रहा है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल. Now let us move to question number 7. What according to the author, what was garbage for the children? Yes, this is now for the children. क्वेश्चन पढ़ते समय बेटा आप बहुत सावधानी रखें, बहुत ध्यान से पढ़ें, कोई हड़बड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है. According to the author, what was garbage for the children? And the right answer is, it was a wonder. Sometimes they got some eatables, sometimes they got coins, which they called gold as well. So it was wonder to the children, matter of surprise to the children, and for the parent it was means of survival. Remember it. Who was Sahib? Sahib Alam was the hero. You know that. So he was a shopkeeper, a servant, a rag picker, or all. So समझ के जवाब दीजिएगा. He was a rag picker. हो सकता है कुछ लोग all पे आंसर सोच ले, but my dear, he was not a shopkeeper. He was a servant, of course. He worked in the tea stall. You know, he was a rag picker. तो all नहीं लिखेंगे क्योंकि shopkeeper, he was not a shopkeeper. Question number 9. What was Sahib looking for? साहेब किस चीज की तलाश में था? He was looking for eggs, he was looking for gold, he was looking for coins, he was looking for toys. Confusion it can be. Some of you will think of gold and some of you will think of coin. So you may be confused. So the answer you have to go for is gold. Actually he was looking for coin, but to those coin he called gold. So the right answer will be gold. Need not be confused. You can talk to me if there is a kind of confusion in your mind. Question number 10. Is Sahib happy working at the tea stall? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में स्पष्ट रूप से पढ़ा लिखा हुआ है, तो he was earning 800 rupees, but he was not happy. तो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है. देखिए यस लिखें. Yes, he was happy. Yes, he earns money. No, earning. या no. No means no, he was not happy. Earning but no freedom. Yes, this is the answer. He was not happy because though he was earning, but he was not happy because he had no freedom. आपको ध्यान होगा एक सेंटेंस यूज किया अनीस जंग ने. The weight of canister was more than his back. वो जो पीठ के पीछे लेके बैग चलता था साहेब, that was lighter. And the canister जो वो दुकान पे उठा के उसको रखना पड़ता है was heavier. It means he was not happy. Question number 11. Why did Sahib Alam not go to school? Why did Sahib Alam not go to school? So option you can read meanwhile. आप पढ़ सकते हैं आप अपने आप. And the correct answer is he had no money to pay fees. इसलिए जब ऑथर ने उससे पूछा था, so he immediately said, when you open the school, I will definitely get admission to your school. And then the second time he asked the author, and author was embarrassed because she just said for the sake of saying, and now she felt as if she is trapped. Sahib was eagerly waiting for the author to open a new school so that he may get admission there. साहिब बड़े ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि मैडम का नया स्कूल खुलेगा तो मैं उसे ज्वाइन करूंगा. That was the purpose of Sahib. If you remember it. Do you remember? Do you remember, children? I hope you do. Now, question number 12. What is the meaning of Sahib Alam? Sahib Alam का मतलब क्या होता है? Honor, rich, poor man, Lord of the universe. Everybody knows it. Sahib Alam, पूरी दुनिया का बादशाह. And the irony is that he does not know the meaning of his name, and even it means Lord of the universe, पूरी दुनिया का मालिक, जबकि वो तो अपने आप का खुद का मालिक भी नहीं था. That is irony. Where was Sahib employed? साहिब कहाँ काम करता था? Everybody knows, at a tea stall in Simapuri, at a sari shop, a jewelry shop, a sweet shop. So here it is answer. Why is the author calling garbage as gold in the story? ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड
क्यों कहा in the story? Because of the jewels in it, because of gems in it, because of gold in it, because of its encashment value, because of its encashment value. That is the answer. क्योंकि it turned into cash. वो जो प्लास्टिक उठा के लेके जाते थे, जो कचरा उठा के लेके जाते थे, उसे फिर वो किसी वेंडर के पास बेचते हैं, कबाड़ वाले के पास, जंक डीलर के पास, and he gave them money, so they got cash in return. That is why the author calls it gold. Question number 15. What do the boys appear like to the author in the story? How do the boy look to the author? How did the author took them as? Morning crows, evening crows, morning birds, evening birds. This is cheerful one. Morning birds. Fresh, happy, a shine on their face. Question number 16. Name the birthplace of the author. Personal question on the author. About the author जो लिखा रहता है शुरू में, आप उसे पढ़ेंगे तो you will come to know and you will get the answer. Rourkela, Orissa is the right answer. What does the title Lost Spring symbolize? Lost Spring is अनीस जंग ने इसका टाइटल दिया है, तो what does it symbolize? The correct answer is lost blooming childhood. उनका खिलता हुआ बचपन lost, खत्म हो गया, बीत गया है. That is the meaning. Now, Sahib hailed from which place? Hailed means came from. Which place did he belong to? Delhi, Simapuri, Greenfield of Dhaka, none. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए. Sahib hailed from which place? And the answer is going to be, what is the answer? Who will tell me? Any guess? Yes, the answer is Greenfield of Dhaka. अगर आप सीमापुरी लिख देंगे तो वो आंसर नहीं होगा. Where did he live? Simapuri was his temporary place to stay. Where did he hailed from? Sahib hailed from. Originally he belonged to Greenfield of Dhaka. That is why I took a pause. I wanted to give you time to think. बच्चों, हमारा पर्पस केवल इतना नहीं है कि मैं पढ़ता रहूं, आप सुनते रहें और मैं आंसर बताता रहूं. ये कोई भी कर सकता है आपके लिए. इफ आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक. 20 मिनट का समय निकालिए. देवांगन सर के वीडियोस 20-22 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते, लेकिन इन 22 मिनट में आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता है. मैं प्रॉमिस करता हूँ चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया, टीचर्स कैन नॉट फाइंड मोर देन दिस 40 MCQs फ्रॉम अ चैप्टर, एंड इट इज ओपन, इट इज गिवन एवरीवेयर. आप जब यूट्यूब चैनल्स देखते हैं या बाकी सर्च करते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा, आपको PPTs मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, but you will not be getting MCQs with you, my dear. So be serious and watch it and share it with your friends as well. So now question number 19. Why did Sahib go through garbage dumps? Your options are there. To find a silver coin, a rupee, a 10 rupee note, all of these. And the right answer is all of these. Sahib had no idea कि उसे क्या मिलेगा. To find silver coin, छोटा मोटा 2-4 रुपए का सिक्का. To find a rupee, जो भी मिल जाए. 10 rupee note मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. All of these. So the answer is all of these. Question number 20. Why did Sahib leave his house? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा? घर मतलब कहाँ का? ढाका का. Because the storm swept away his house and field, to enjoy a life of leisure, to find friends, to go to college. बाकी के ये 3 ऑप्शन स्पष्ट रूप से गलत है, आपको पता है. The correct answer is because the storm swept away his house and field. That is the correct answer. Now question number 21. What forced Sahib to be a rag picker? वो रैग पिकर क्यों बना? हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम या एक्यूट पॉवर्टी? अत्यंत गरीबी के कारण वो क्या बन गया? रैग पिकर. ये पीपल अराउंड हिम आप कह सकते हैं, क्योंकि ही वाज वर्किंग इन सच अ प्लेस वेयर ऑल द चिल्ड्रन वर रैग पिकर. ये इनमें 4 पॉसिबल आंसर हैं, बट द बेस्ट सुटेबल आंसर इज एक्यूट पॉवर्टी मेड हिम to become a
वेयर इज सीमापुरी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आपने टेक्स्ट बुक को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो यू वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। इट इज इन द ईस्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली तो सबको पता है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली के पास है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ईस्ट ऑफ दिल्ली। इट वॉज नॉट इन नोएडा। Why did Saheb leave Dhaka? Again the same question in a different way, and the options are different. Why did Saheb leave Dhaka? उसने ढाका क्यों छोड़ा, ये आपका प्रश्न है। Because of lack of enough food, no opportunity to work there. Because of the lack of resources, correct है। Because of friends नहीं, because of parents कह सकते हैं, because parents also wanted to come, but here the correct answer is because of lack of enough food. Question number 24. Let us discuss question number 24. Who are responsible for the poor condition of Bengal makers in Firozabad? हम बात किसकी कर रहे हैं अब? मुकेश की बात कर रहे हैं। Who are responsible for the poor condition of Bengal makers in Firozabad? Part 2 की स्टोरी है। Parents, yes they are responsible. Society, yes they are responsible. Bureaucrats, yes they are responsible. So overall the answer is all of these. The answer is all of these. Question number 25. What efforts can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? पहले मैं बात कर लूं कि उसका ड्रीम क्या था। He wanted to become a motor mechanic, a car driver, and for that उसके लिए वो किस बात के लिए तैयार था कि उसे अगर घर से 12 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो he was ready, barefoot, नंगे पाँव में जाने को तैयार था। तो what efforts can help Mukesh materialize his dream? अपने सपने को सच करने के लिए what he needs to do, what can fulfill his dream, that is the question. Hard work, of course he needed. Going to garage, of course. Guidance of his honor, yes. So the answer is all of these. What are the hazards of working? What are the hazards of working in the glass Bengal industry? What are the hazards? क्या नुकसान होते हैं, नुकसानदायक चीजें हैं ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान है? पुअर हेल्थ, यस। इम्पेयर्ड विजन, आंखों की रोशनी का कम हो जाना। मिजरेबल लाइफ, यस। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। All of these is going to be the answer. Question number 27. Who employs the local families of Firozabad? फिरोजाबाद के लोकल फैमिलीज को कौन नौकरी देता है, कौन एम्प्लॉय करता है? The options are given there. Bureaucrats, yes, they employ. Merchants, yes. Politicians, actually it is not employ. It is wrongly written here. Children, you can call it exploit. Exploit. कौन उनका शोषण करता है? I'm sorry for this word, children. Who are the people who exploit the local families of Firozabad? आपको ध्यान होगा, हमने बताया था, the middlemen, the police, the bureaucrats, the politicians, they have never done any work for the upliftment of the people there. So bureaucrats, merchants, politicians, the glass blowing industry. तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें ऑल द अबव आंसर है। इट इज नॉट देयर। सो एम्प्लॉय इज लेट द वर्ड एम्प्लॉय बी करेक्ट। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार डील करते हैं और इसको एम्प्लॉय वर्ड से ही जोड़ते हैं। एम्प्लॉय मतलब नौकरी देना। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27। इनको कौन नौकरी देता है? इन ग्लास लोकल फैमिलीज को तो कौन नौकरी देता है? चलिए एक बार देखते हैं। ब्यूरोक्रेट्स नौकरी नहीं देते हैं, मर्चेंट्स नौकरी नहीं देते, मर्चेंट तो उधारी देते हैं, पॉलिटिशियन तो उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री गिव देम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय वर्ड करेक्ट है बेटा, एम्प्लॉय वर्ड ही पढ़ेंगे इससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? What is the function of glass blowing industry? The answer are to make windows, to make doors, to mold glass and make colorful bangles. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने अभी तक डी मार्क कर लिया होगा। What makes the working condition of children worst in the glass industry?
ग्लास इंडस्ट्री में किस कारण से बच्चों की वर्किंग कंडीशन खराब होती है? ऑप्शंस आर गिवन हियर, एक बार शांति से पढ़ लीजिए आंसर। डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, करेक्ट। Dazzling and sparkling of welding light, yes, correct. High temperature, yes, correct. So the answer is going to be all of these. Question number 30 हम बात करेंगे, what excuse do the rag picker give for not wearing chappals? फिर से हम किस पे आ गए? साहिबी आलम पे आ गए, फर्स्ट स्टोरी पे। वो क्या एक्सक्यूज देते हैं? मदर्स डोंट गिव, नो इंटरेस्ट, अ ट्रेडिशन, या ऑल ऑफ दीज। फिर से सोचिए, एक आंसर पे पढ़ के ये बात तो सही है कि मम्मी उसे देती नहीं है, केवल ओकेजन्स पे पहनने देती है, ये बात सच है। तो ऐसा नहीं कि केवल आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और करेक्ट आंसर दे दिया, दिस इज ऑल्सो राइट। नो इंटरेस्ट, हाँ बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं है और उनके घर में गांव में ट्रेडिशन भी है, तो का आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। हु इज मुकेश? बताइए कौन है? रैग पिकर तो मुकेश बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट भी बिल्कुल नहीं है, वर्कर भी बिल्कुल नहीं है, बेंगल मेकर। मुकेश इज अ बेंगल maker. I hope it is clear. Mukesh is a Bengal maker. I hope children it is clear to you. Tell me, is it clear? Now, question number 32. Let us see question number 32. What are the reasons for the migration of people from village to city in the? लोग गांव से शहर की ओर क्यों जा रहे हैं? What is the reason? What is the reason that people are migrating from from villages to the city place? Your options are given there. Sweeping of houses and fields by storms, no money, education and unemployment, safety. All answers are correct, but the best suitable answer is sweeping out of houses. फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, घर पूरा खराब हो गया और पूरा का पूरा फील्ड, खेत बर्बाद हो गया. That is the reason that their houses are swept away by the storm. Their fields are swept away by the storm, and that is the reason these people are shifting from the village to the cities. Question number 33. What compels the workers in Bengal industry of Firozabad to poverty? What compels the workers in the Bengal industry of Firozabad to poverty? किस कारण से वो इतने गरीब हैं? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, यस, उनकी जाति प्लस जो खानदानी काम है उसको लेके बैठे, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे. कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, लोग सोचते हैं हमारा तो कर्म ही यही बनाने का है. ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, यस, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल. द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज. द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? बताने की जरूरत नहीं है. क्या के लिए फेमस है? फॉर बैंगल्स. ऑल ओवर इंडिया फिरोजाबाद से बेंगल सप्लाई होती है. फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? उसी चीज को दूसरी तरीके से पूछा गया है. कॉटन इंडस्ट्री तो है नहीं, फर्नीचर इंडस्ट्री है नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है नहीं, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. सो 35 डी इज द आंसर. नाउ 36. हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली के दूसरे लोगों से डिफरेंट क्यों है? कैसा डिफरेंट है? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, यस, वो बिल्कुल फर्म है, डेयर कर चुका है, अपने डिसीजन पे दृढ़ है और अपनी बात पे क्लियर है. बीइंग अ फाइटर, फाइटर जैसी कोई बात नहीं. बीइंग ए कावर्ड, वो कावर्ड तो आप उसे कहेंगे नहीं. नॉट क्लियर, ऐसा नहीं कहेंगे. तो द आंसर इज बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में जीवित रहने के क्या साधन है? सर्वाइवल के मीन्स क्या है? वर्क, मर्केंडाइजिंग, एजुकेटिंग या रैग पिकिंग? सीमापुरी मतलब सिंपल सी बात है, रैग पिकिंग. आंसर इज रैग पिकिंग. फिरोजाबाद मतलब बेंगल इंडस्ट्री. व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? सीमापुरी को मेटाफोरिकली व्हाट डिड द ऑथर कॉल? सीमापुरी का मतलब ही क्या होता है? अ लिटिल हेल, छोटा सा नर्क है. हम कैसी तुलना करते? कश्मीर स्वर्ग है. सीमापुरी को ऑथर ने क्या बोल दिया? ये अपने आप में एक जीता जागता
hell, नर्क है. What is Mukesh's dream? To become a doctor, to become merchant, to become a rogue, that is thug, to become a motor mechanic. Yes, he wanted to become a motor mechanic. So here we come to an end, children. This is the last question. Let us see what change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of neighborhood club. Neighborhood club में जहाँ टेनिस चल रहा था, वहां पे जब साहिब खड़ा था तो उसके क्या एक्सप्रेशन थे, क्या चेंजेस उसमें देखने को मिले. द ऑथर इज आस्किंग दिस. एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, करेक्ट, दूसरों को देख के. लॉस्ट हिज ऑनरशिप, यस, वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा. लॉस्ट जॉय, यस, यही उसकी फीलिंग थी. द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. So children, that's all, and here these are the answer. You can scroll and you can see. I will give you this PDF completely. You can down in the description box you will get two things: a complete PDF. If you want, you can take the printout of it and you can keep it as your copy, and you can revise it whenever you want. Secondly, I'll be giving you a link to do many things. First is Google Form. I said, children, if you like this channel, definitely subscribe it. Not for the sake of subscribing, but you will be getting the notification. अभी आपके टीचर्स आपको देते होंगे इसके लिंक, जरूरी नहीं है आपको हर बार मिल पाए. If you subscribe the channel, you will be getting notification directly. Do share it with your friends, those who are studying in class 12. You can contact me on WhatsApp number. Here is the Facebook link. If you see, if you what should I say, if you click it, you will definitely get to the Facebook page of English with Devangan sir. There also you can get the link. This is the Telegram channel. You can join it by clicking invitation link it is, and you can mail me through English with Devangan sir @gmail.com. I hope children this video is useful to you. Thank you for watching it. See you. Have a nice day.